हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 28 अक्टूबर 2022, दिन है फ्राइडे और आज हम करने जा रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्शन अगेंस्ट झारखंड सीएम, गवर्नमेंट hints at atom bomb. You to make public recommendation by election commission on action to be against Jharkhand CM Hemant Soren over the ownership of mining lease more than 2 months after it sent Governor Ramesh Bayas on Wednesday indicate action on the matter, saying interview atom bomb could explode at any time in Jharkhand. तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया है। डेडलाइन मिस्ड। I am excited about what our two great democracy can achieve, British Prime Minister. In their first conversation since Rishi Sunak entered 10 Downing Street, Prime Minister Narendra Modi spoke to the new British Prime Minister Tuesday. They agreed on the importance of early conclusion of comprehensive and balanced free trade agreement. तो उसके related ये article है। India and UK are expected to sign free trade agreement FTA by Diwali, but they missed a deadline due to lack of concession and transition in UK political leadership. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। Some NGO involved in religious conversation, government took action. Saha say crime borderless must fight together beyond the boundaries. Besides the combating terrorism and bringing down violation in conflict theater, Center has also tightened the functioning of the NGOs that are engaged in anti-national activities. A religious conversation यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने ट्यूसडे में कहा है, तो ये delivering कर रहे थे इनॉग्रेट एड्रेस टू चंतन शिवरी and brainstorm session of the Home Minister and top police officer from all states. Saha also said that at the time when crimes have become boundaryless, many trans-border laws have been enacted and states must come together to fight crime. It is our collective responsibility that we combat crime together. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। Send Pakistan tough message. Rajnath, we are walking north. We have to reach Gilgit Baltistan. POK people innocent Indian. We feel their Pak will pay atrocity. Sending Pakistan a tough message over the atrocity on people of Pakistan occupied Kashmir. Defense Minister Rajnath Singh ने Tuesday में कहा, we have not only just begun walking north. Our journey will become complete when the implementation resolution passed unanimously by the Indian Parliament on the February 2020, 1994, reaching the remaining part of POK, Gilgit and Baltistan. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। टाटा एंड एयरबस ने मेक किया है C295MB ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IF बड़ोदरा में, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। मूविंग इनटू अचीव माइलस्टोन इन हाईली कॉम्पिटिटिव एविएशन इंडस्ट्री एंड बूस्टिंग इज मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ट्यूसडे में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंडियन एयरफोर्स विल कम अप इन बड़ोदरा टू स्टार्ट 40 ऑफ द 56C 295MB MW transport aircraft being produced from the Airbus Defence and Space SA Spain will be manufacturing in the new facility in Barodra. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल जाएगा। BCCI bet for the pay parity, same match fee for women and men, new era of equality. In a significant decision, the Board of Control for Cricket in India BCCI on Tuesday में अनाउंस किया है कि पे इक्विटी पॉलिसी saying that it centrally contract men and women players who will get same match fee. The means women players now get 50 lakh per test match and 6 lakh for one day international and 3 lakh for the T20 international. Till now they were paid 1 lakh for the व्हाइट बॉल मैच एंड 4 लाख फॉर टेस्ट। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल हिट आउट एट बीजेपी आफ्टर गाजीपुर लैंडफिल विजिट, लोअर द हीट्स ऑफ दलित इन सेम।
Chat politics heat up. BJP takes a dig at CM over pollute Yamuna. Chronic absence in Delhi government school. Easier to bring back younger kids, say official. At Aslo Sanctuary for artificial waterfall. Delhi seek worse air quality yet this season. Low wind speed to blame. Red light on, Gadi off, driver put off, LG is yet to clear file. Rai. Naturalistic and versus Nick Natural. Supreme High Court interim relief to former trademark suit. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे. बीजेपी ड्रॉ वेलफेयर ऑर्डर लाइन साइड बैक इलेक्शन कमीशन. कांग्रेस लेफ्ट से ओवररीच. ये पार्टी रिप्लाई टू इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड अमेंडमेंट प्रपोजल, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है. आफ्टर अकेलेस क्लेम द नेम बीइंग टेकन ऑफ वोटर लिस्ट, इलेक्शन कमीशन आस्क्स हिम फॉर प्रूफ. Jaishankar and the Lavrov to hold talk in Moscow on November 8, a day after Russian Defense Minister Sergei Shoigu called up Defense Minister of India, China to convey Moscow concern about the purported Ukraine plan to use dirty bomb, repeating allegation that Ukraine and West have already rejected. Russian Foreign Minister on Thursday said External Minister Jaishankar will travel to Moscow to hold talk with Russian counterpart Sergei Lavrov November 8. तो उसके ऊपर ये छोटा सा आर्टिकल दिया गया है. बीजेपी dismissed Barrett claim of TRS, say can't topple government with 4 MLAs. Not a place for long speech. Saha to VG at Chantan Siviri. फरीदाबाद रैली. साहा से हुड्डा led 3D government of Dharawai, Daman and Dilar. Price Katra. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल से. स्वामी मूव हाई कोर्ट से सेंटर फेल टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ हिज प्राइवेट रेसिडेंट. फॉर्मर जो राज्यसभा के एमपी थे सुब्रमण्यम स्वामी, वो मूव करे दिल्ली हाई कोर्ट को, एलिजिंग दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव फेल्ड टू इंश्योर सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन द प्राइवेट रेसिडेंट. हाई कोर्ट हैड लास्ट मंथ डिक्लाइंड टू स्वामी टू इवेक्ट हिज गवर्नमेंट अकोमोडेशन इन 6 वीक. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए. फ्रॉम इनसाइड पटियाला जेल, ऑनगोइंग सिद्धू सागा, इग्नोर मल्टीपल समन टू अपीयर एज विटनेस इन केस इन्वॉल्विंग एक्स मिनिस्टर. Two former Congress ministers from Punjab are currently lodged in the same Patiala central judge, one an accused and other a witness in case. तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया. Rebellion grow in Himachal. BJP's Nadda CM rush to in try to peace. After promising all support, Kerala government step aside in the Vice Chancellor Imig Broligi. PM Museum Redesli Gallery on Modi on open for public in Jain. ये जितने भी पॉलिटिकल न्यूज है हम उनको सिर्फ ऑनलाइन डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे. 75th एनिवर्सरी ऑफ जम्मू कश्मीर एसेसन. बीजेपी ब्लेम नेहरू फॉर कश्मीर ब्लंडर, कांग्रेस हिट बैक. यूएसए 3 इंडियन स्टूडेंट किल इन रोड एक्सीडेंट. Kashmiri Pandit leaves Sofian village, point to fear after killing. 7 KP government Safari Valley quit, other return to Jammu, keep up streak. Arunachal PCS paper leak, CBI register fire. Emission in India, 6 other nations top pre-COVID levels. Rajasthan government get NHRC notice over girl accused. Women doing housework not like maid. High Court quashed quarrelty case against the husband-in-law. Hate speech. Azam gets 3-year jail, granted bail. सीनियर समाजवादी पार्टी के लीडर एमएलए आजम खान ने ट्यूसडे में कन्विक्ट हुए हैं. हेड स्पीच केस लॉस्ट ऑन द run of the 2019 Lok Sabha election and sentenced him 3 years in prison. Who represent the Rampur Assembly constituency and granted to bail by the Rampur MP MLA court which convicted him. And also sought to 8 days time to file an appeal to higher
court against the verdict, which court granted. MLA can file the appeal within a month, से रामपुर स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर SP पांडे। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया। Dijamba Port construction, Pfizer Folk Froster project site with the 100-day protest. NI give probe corps arrest 6 men involved UFPA. Bank in probability technique, cops trace police exam cheat. Karnataka police have the mathematical probability technique usually used in banking exam to identify those who alleged to cheat in the police सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम दैट हेल्ड ऑन अक्टूबर लास्ट ईयर। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो एडिटोरियल की है। एडिटोरियल के हर एक आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स में। ग्रीन सिग्नल that is taken so long for Indian farmers to plant a GM food course so a approach that the neither Swedish or nor scientific. The genetic engineering appraisal committee ने recommendation किया environmental release on targeting hybrid mustard DMH11 for the seed production and commercial cultivation. If approved, it will the first ever genetic modified GM food crop that Indian farmer will planted. It will also be a GM course after the Bitcoin, whose originally version containing signals intake pest resistant gene was released in 2002 and the improved double gene product in 2006. Even D11 incorporating 3 alliance bacterial genome that enabled hybridization first developed in 2002. That it has taken so long. It also does not know of the GESC green signal which translate into physical policy approval, only demonstrating the state to resistance to adoption of the technology, meaningless for the region and not grounded in science. The fact for सेल्फ नॉलेज से पढ़ सकते हैं। Missing on library shelf, variety of books in English for the any display is many times more than that in Hindi or other in Indian language. About a decade ago, annexes to find a Hindi to have the faculty of SCERT and the colleagues for the teacher education that was associated with and worked into the library of the Central Institution of Education, New Delhi. The institution has offered pre-service teacher program, preparation program in the Hindi along with the English and postgraduate program allow students to read examination in thesis in Hindi. I was impressed by the volume and variety of book in library, and once I had plenty to aware eyes and mind from the books to display in different disciplines, I asked for the Hindi section display the book in English. Lead me preparation are all those Hindi section it comes to roots of. There are many challenges in journey. They need to be worked upon, but the most difficult part is not acceptation of paper and reading in Hindi language. Academy work for the proposal of credit and academy circle, including university. Neither the paper and conference representative made in the language accordance respect to written nor it the work on the academic translation aspect as the academic individuals. Even though we know how to challenging the translation good academic text. तो ये हिंदी और इंग्लिश बुक के ऊपर पूरा आर्टिकल दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। Renew the goal. UN climate report is nudged for the country to upscale climate ambition. It cannot be done in soil. A new UN change report holds to the glimmer of hope that the world GHG burden in 2030 will less than what we feared about a year ago.
It shows that the national global warming mitigation target will increasing emission by 10.6% by 2030 and compared to 2010 level. This is the improvement last year assessment which project to emission 2030 will rise it nearly 40% over the 2010 level. This year analysis also show the emissions are not likely to increasing after 2030, but that is where the good ends need. Cultivated climate ambition of the country will not limit to temperatures rise to 1 at least 2.5 degree warming warm the report. ये UN के जो न्यू पे a symbol is not enough. An organizational push in needed to make Mallikarjun Kharge election meaningful. Every event in multiple meaning of politics. People read it according to their ideology, preference, and duties. Meaning, on the Wednesday, Mallikarjun Kharge, a non-Gandhian former, become the president. Indian National Congress Kharge, a Dalit from the Karnataka, is grassroots politician who are hard to enroll from the Congress rank or to national promises. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं उनके पॉलिटिकल पार्टी के तो उनको ऑर्गेनाइजेशन पुश चाहिए जिससे वो उनकी इलेक्शन मीनिंगफुल हो सके और चीजों को सुधार सके कांग्रेस में. However, the Congress will need to strong organization at the grassroots to turn the attention attraction among the electoral to vote. Simply put, the Congress may benefit political from Kharge appointment. However, the Congress has the organizational muscle. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे. द बुक इज कमिंग डिमांडिंग फैन जॉर्ज आर मार्टिन ओ हिम ए लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग एंड लिटिल मोर स्पेस. हैज द हेल्थ ऑफ any author trouble reader as much the health of George R. Martin? What is this phase? Back in 2014, in the interview, the then 65 years old writer and famously made a large gesture when he asked if they would live long enough to finish a Song of Ice and Fire, his fantasy book series. The early this year, the fantasy by the observatory section of fan, he swore up giving to update about the 6 books in the series, The Winds of Winter, which was have been working on since 2010. तो उसके ऊपर ही आर्टिकल देखे. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे जो आइडियाज के पेज है. न्यूट्रिशन नॉट हंगर, वी शुड लूज मोर टाइम फॉर our global hunger index ranking. Instead, states should be remaining NFHS funding to improve the portion practice for most vulnerable. Every October, Global Hunger Index (GHI) is released. It generally creates uproar and good reason, but this time it have gone overboard. The foundation has the 16 years old German and Irish organization which measure and rank country on the hunger index at the global and regional and national level, but not in sub-national level where the some Indian state far better. The GHI state aim to reduce hunger around the world, but the methodology focus the disproportionately on less than the 5 years old. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है जो हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो अक्टूबर में रिलीज होती है. इस बार के इंडिया को 10 addition to the earth in the continue to exist. This means that we could be staring at major climate crisis in the year to come.
our future generation may never get experience the beauty of nature, glacier and ocean and snow and river that we have been founded to see and experience. In a view of danger lurking ground, Prime Minister Narendra Modi October 20 unveiled the action plan for Mission Life, lifestyle for environmental and India lead global mass movement that will use to individual and community for action, protect and preserve the environmental. तो उसके ऊपर आर्टिकल जाएगा मिशन लाइफ जो अक्टूबर 20 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनाग्रेशन किया गया था, जो बेनिफिट करेगा वर्ल्ड को, जो छोटे छोटे इफर्ट किया जा सके इन्वायरमेंटल के लिए, तो उसके ऊपर ही आर्टिकल जाएगा। ये यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के प्रेजेंस में ये इनॉग्रेशन किया गया था, तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। एन इनकम टैक्स लेसन फॉर जीएसटी, फेसलेस रिजीम फॉर डायरेक्ट टैक्स हैज डिलीवर्ड, जीएसटी रिमेन फेस टू फेस। In the Income Tax Act was introduced in the India 1860 by Sir James Wilson. The first post-India independent act was passed by 1961, and through it has witnessed several amendments since. It cannot be said that no amendment in tax law brought end to the corruption within the tax department until the Narendra Modi government come power and introduced the faceless tax regime. As the practicing tax consultation for the last 40 years, I feel the corruption is the tax department, which used to be major causes and concern of every taxpayer who suffer the hand of the dishonest tax official, was witness a significant change. It is not less than a miracle to see the single decision of the Modi government has practically resolved this issue. तो उसके ऊपर ही आर्टिकल दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे जो एक्सप्लेन की पेज है, हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अल्फाबेट माइक्रोसॉफ्ट है कोल्ड इंडियन आईटी कुल स्विच टू। शार्प ऑफ अल्फाबेट इंक, parent of Google, Microsoft got sharply by 9.6% and 7.7% on Wednesday following the weekend then expected earnings for the quarter ended September and the growing concern over the economic slowdown in USA and other economies. With the inflation is bigger concern for the world economy and central bank including USA Federal Reserve rising the rate over the past 2-3 quarters, growth outlook for companies and the board investors sentiment has been dimmed as the American tech giant face the heat. The Indian IT sector, which depends to be large extent of business and revenue from the USA and other development economy, is unlike to पूरा आर्टिकल दिया गया है। Hawk Air defense equipment, USA to pull out shortage, upgrade Vietnam war era weapon to supply to Ukraine as Russia remain run missile. United States ने considering क्या है interviewing the old Hawk Air defense equipment from the shortage to send Ukraine, which is facing heavy barrage of Russian drone fire and cruise missile. Reuters की रिपोर्ट में last this week quoting unmanned official, the report said the unclear how many Hawk system and missile United Nations available to send Ukraine. The White House declined the comment. It said तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। Hawk, a interceptor missile, will be upgraded to Sting missile system, which is smaller and shorter range air defense system. USA sent the shorter fire anti-aircraft Sting to the Ukraine early on the year war. The place ordered to be for more stock in the missiles by the Raytheon Technology Corps after the demonstrated great success in scrapping Russian air stealth. तो उसके ऊपर ही आर्टिकल दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। म्यांमार वायलेंस चाव, मल्टीपल बैटल आर रेजिंग बिटवीन द जनता एंड रेसिडेंट्स, द वेस्ट डज नॉट हैव द बैंडविड्थ फॉर म्यांमार, ASEAN have been ineffectual, India is trading its fine line, Russia and China have rushed in. ASEAN foreign member
were meeting in Jakarta on Tuesday to discuss their position in Myanmar, where the military is using increasing violent methods to suppress the armed resistance against the February 2021 takeover. 20-month one junta has not been able to establish full control over the country. Many of Myanmar ethnic armed organization EAO have joined armed civilian group called People Defense Force PDF, which is allowed to self-declare National Unity Government. NUG is exile. The meet is being held ahead of the ASEAN East Asia Summit in Cambodia from November 10 to 13. Unprecedented difference among the members of the grouping on how to आर्टिकल दिया गया। म्यांमार में जो 20 महीनों से वहाँ के जो आर्मी के द्वारा टेक ओवर किया गया था और वहाँ पर अभी भी आर्मी की शासन चल रही है, तो आने वाले दिनों में जो आसियान की मीटिंग होने वाली है नवंबर 10 to 13, उसमें ये चर्चा किया जा सके कि म्यांमार में कैसे पीस एंड स्टेबिलिटी ला जा सके और लोगों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दिया जा सके, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। Why a full-time USA envoy matter and the cost of not having one. बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नेम किया है सीनियर डिप्लोमेट एलिजाबेथ जोन्स, जो 74 ईयर्स की है, चेरेज डी अफेयर इन interim in the embassy in India and 16th interim envoy to 19 months since January 2021. The appointment considering the placeholder until a full-time ambassador is confirmed by the USA Congress. जो फुल टाइम यूएसए के एम्बेसडर है वो क्यों मैटर करता है इंडिया के लिए, और कॉस्ट क्या नहीं होगा हैविंग जो उसके नहीं होने की वजह से, तो उसके ऊपर आर्टिकल देंगे। जो एलिजाबेथ जोन्स है वो यूएसए के इंटरिम इन्वॉय होंगे इंडिया में, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे जो वर्ल्ड की है। वेस्ट अनडिवाइडेड डोमिनेंस ओवर वर्ल्ड अफेयर कमिंग टू एन एंड, पुटिंग रूल आउट द न्यूक, वांट्स वेस्ट कैन टारगेट इट कमर्शियल सैटेलाइट। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ट्यूसडे में डिनाई किया है हैविंग any intention of using nuclear weapon in Ukraine, but escorted to conflict there as part of alleged effort by the West to secure in global dominance, which he insists are doomed to fail. Speaking of conference of international foreign policy expert, Putin said the pointless for the Russia to strike Ukraine with nuke weapon. We see no need for that. Putin said there is no point in that, neither political nor military. तो उसके ऊपर आर्टिकल दी गई। Evacuation intensify in Kherson power set hit say Ukraine. Tens of thousands of residents have been evacuated from the area around the strategic city Kherson as heavy fighting and attack on power infrastructure continue. Moscow ने अपॉइंट किया atrocity in southern Ukraine. Authorities in southern Ukraine said Tuesday, तो उसके ऊपर आर्टिकल दे गया। Bajwa given lucrative offer by Imran government aim to turmoil ISI chief. Imran never made the unconstitutional demand during the backdoor talk, say his party. Pakistan ISI chief Lieutenant General Nadim Ahmad Anjum said ने ट्यूसडे में कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर Javed Bajwa was given a lucrative offer in March by giving the government aim to political turmoil as the top spy launched a valid attack on the Astar promise Imran Khan at the unprecedented press conference. तो उसके ऊपर ही आर्टिकल देंगे। G20 ahead, Xi Jinping said ready to work with USA for mutual benefit. प्रेसिडेंट सिंह जिनपिंग और चाइना के उन्होंने विलिंग किया है वर्क विद द यूएसए टू फाइंड वेदर गेट अलोन benefit of both. Chinese state television report on Tuesday ahead of the possible G20 summit with President Joe Biden in Bali in Indonesia. तो उसके ऊपर आर्टिकल देगा। China will return to China on time, say Putin allies. On the Russian President Vladimir close allies while chief इग्नोर सचिन ने ट्यूसडे में हेल्प किया प्राइस टू चाइनास लीडर को कि ताइवान को रिटर्न करना चाहिए चाइना को, द नेटिव हार्बर ऑन टाइम। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया है। क्राइसिस ओवर ब्रेक्जिट पुशेस
Britain exit from the European Union article देगा aim to grudging protest Iran Kameke vote to avenge deadly attack on Sunni family will never be normal against say parent of murder fraudulent student. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो इकोनॉमिक की है मल्टी प्रपोजल टू क्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट एफिलिएट बॉडीज ग्रीविनेंस पैनल ने सोशल मीडिया में कहा है कि गवर्नमेंट टू बी अहेड ऑफ डिस्पाइस कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने रिसीव किया फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर over the proposal of creating government appointed bodies that will be empowered to the review and possible release the content modernization and users grievance decision taken by the social media companies like Facebook, Twitter, YouTube, Indian Express ने लॉन्च किया तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया RBI policy body set to meet November 3 to explain misusing inflation target. After the 119 basis point hike repo rate in last 6 months, Reserve Bank of India के monetary policy meet करेंगे November 3 में discuss को report of submit by the government to final failure to meet inflation target for 3 quarter in row तो उसके ऊपर ये article दिया क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेटिंग हो रहा है 7.41% इन द सितंबर आरबीआई मिस द मेंटेन द इन्फ्लेशन टारगेट 4% विद इन द बैंड ऑफ द प्लस माइनस 2% for the 3 consecutive quarters January to September 2022 the failure to meet inflation target and 3 quarter required to Reserve Bank to report government to explain the reason for not achieving the target क्योंकि गवर्नमेंट ने सेट किया क्या था कि 4% के प्लस माइनस 2% के इन्फ्लेशन रहना चाहिए या तो 2% कम या तो 2% ज्यादा 2 से 6% के अंदर क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन 7.4% ऊपर है जो कि जनवरी से लेकर सितंबर तक है उसमें टारगेट फेलिंग जो हुई है उसकी मीटिंग होगी अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक राइज रेट बाय 75 बेसिस पॉइंट यूरोपियन यूनियन के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अनदर आउटसाइड इंटरेस्ट रेट हाइक किए गए सिक्वेजिंग द आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन को इंक्रीजिंग द रेट ट्यूसडे फास्टेस्ट पीस on euro currency history and raising the question about the how far banks intend to go with threat of recession looming over the country जो रिसेशन के लूमिंग के थ्रेट में यूरोपियन के सेंट्रल बैंक ने फिर से 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है जो 25 मेंबर गवर्निंग काउंसिल से राइज किए इंटरेस्ट बेंच पर बाय द 3 क्वार्टर परसेंटेज पॉइंट ए मीटिंग Frankfurt and matching it the record increasing in the last month joining the USA Federal Reserve and making a series of अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे यो ग्रोथ रिबाउंड इन क्वार्टर 3 यूएस के जो इकोनॉमिक है वो ग्रोथ हो रही है रिबाउंड स्ट्रांगली इन थर्ड क्वार्टर एंड सिंकिंग द ट्रेड डेफिसिट बट द ओवर स्टेट द इकोनॉमिक हेल्थ एज द डोमेस्टिक डिमांड इन द लास्ट वीक 2 years बिकॉज द फेडरल रिजर्व एग्रेसिव रेट हाइक तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे Marks want Twitter to be most respective advertising platform. Elon Musk ने who once tweeted the I had advertising said he wants Twitter to Inc. to be most respective advertising platform in the bid of gain to trust of buyer ahead of the expected close to the 44 billion deal और द सोशल मीडिया फ्रेम तो उसके ऊपर आर्टिकल दे इलोन मस्क ने इंटर किया है ट्विटर के हेडक्वार को कैरिंग करते हुए सिंक थ्रू द लॉबी एरिया तो उसके रिलेटेड एक वीडियो बहुत सारा वायरल हुआ था क्योंकि आने वाले दिनों में 44 बिलियन में ट्विटर को इलोन मस्क किनने वाले हैं
$44 बिलियन में, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो स्पोर्ट की है। तो आज के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस पे इतने ही। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो कुछ लोगों को ये शेयर करें, जिससे ज्यादातर लोगों को ये पहुंच सके रीच, और हम ग्रो कर सके। थैंक यू।